कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट बार मैग्नेट, सोलेनॉइड एंड सर्कुलर करंट कैरिंग वायर. Bar magnet, that is nothing but magnetic dipole. Solenoid, that is also magnetic dipole, and circular current carrying wire also behave as magnetic dipole. We have studied about magnetic field lines of bar magnet, circular current carrying wire and solenoid. Today we will study about the dipole moment, that is magnetic dipole moment of a revolving electron. Here I have taken one revolving electron. This electron is revolving around stationary heavy nucleus. This nucleus is having charge plus Ze. This is the radius of orbit, that is r. मतलब हम ऐसी सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस. So this is the direction of motion of electron. Electron, that is nothing but charge particle. When charges are in motion, at that time what will happen? Some current will flow. क्या होगा? करंट फ्लो होगा. हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में. When charges are in motion, then current will be constituted. So electric current I for circulatory motion is given by I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. What is Q? That is the charge of particle. Charge of electron, that is small e upon time period t. Correct? So I is equal to E by T. What will be the direction of electric current? Current की direction क्या बने? If electron is moving in this direction, then current will flow in which direction? In the direction opposite to motion of electron. It means in this direction. मतलब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, इस तरफ. तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. इलेक्ट्रॉन, that is negatively charged particle. If electron is moving like this in clockwise direction, then current will flow in anti-clockwise direction. So this is the direction of electric current. And formula of electric current, I is equal to E by T. Now suppose electron is moving with velocity v. At this point what will be the direction of velocity? In this direction. Correct? How can we find the direction of velocity for circular motion? Just we have to draw the tangent at that point. Tangent will give us the direction of velocity. This charge particle is in motion, and at this point I want to find the direction of velocity. So velocity will be in this direction, perpendicular to the radius. Correct? Now speed of electron v is equal to, what is the formula of speed? Distance upon time. What is the distance travelled by this electron? That is 2 pi r in time t. So speed of this electron, that is 2 pi r by t. From this, time period t is equal to 2 pi r by v. Time period हमें मिल चुका. Now we can substitute this value of time period in the formula of electric current. So electric current I is equal to E upon 2 pi r divided by v. Denominator is denominator, numerator. So this can be written as EV upon 2 pi r. तो ये हमें मिला इलेक्ट्रिक करंट I. Now we are interested in orbital magnetic moment. कौन सी मैग्नेटिक मोमेंट? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. Orbital magnetic moment is denoted by MO, orbital magnetic moment. So what is the formula of magnetic moment? That is nothing but NIA. क्या ठीक? क्या फॉर्मूला था?
NIA. Number of turns 1. What is the formula of electric current? Electric current I is equal to EV upon 2 pi R. तो ये बन गया EV upon 2 pi R. What is the area of circle? Pi R square. Pi R square. This pi will get cancelled. This R will get cancelled. Then magnetic moment MO is equal to 1 by 2 EVR. So formula of magnetic moment, that is half EVR. Now I can obtain this formula of magnetic moment in terms of angular momentum. Angular momentum. याद है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? स्टैंडर्ड 11 में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन. क्या था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. याद आया? एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. So L is equal to RP sin theta. What is the angle between R and P? This is the direction of velocity and this is the direction of radius R. What is the angle between them? Whatever is the direction of velocity, same is the direction of momentum. This is the direction of momentum and this is the direction of vector R. What is the angle between them? 90 degree. So angular momentum L is equal to R into P, because sin 90, that is 1. Therefore L is equal to R. What is the formula of momentum? Mass into velocity. So RmV. Therefore L is equal to mvr. ये हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मिल गया. बट व्हाट इज m? That is the mass of moving charge particle. So here moving charge particle, that is nothing but electron. So for this condition L is equal to MEVR, where Me, that is nothing but mass of an electron, right? Confusion नहीं होना चाहिए. This is orbital magnetic moment. This is mass of an electron. चल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मिल गया. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? MEVR. यहाँ पे V और R है. Now we can obtain the formula of magnetic moment in terms of angular momentum. But MO is equal to half EVR. Correct? If I multiply and divide by ME, then this formula can be written as half MEVR into E upon ME. क्या ठीक? MEVR into E upon 2ME. What is MEVR? What is this? MEVR, that is nothing but angular momentum. This is equation 1, this is equation 2. Therefore this is nothing but 1 by 2 E by ME into L, because from equation 2. क्या ठीक? MVR, that is nothing but angular momentum. E as it is, 1 by 2 as it is, ME as it is. So MEVR is nothing but angular momentum L. So this MO is equal to E by 2ME into L. Magnetic moment is equal to E by 2ME into L. This E by 2ME, E by 2ME, if you calculate, then you will get 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg. What is E? 1.6 into 10 raised to minus 19. What is ME? Mass of an electron, that is 9.1 into 10 raised to minus 31.
Substitute the value of E, substitute the value of Me. You will get E by 2Me. 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg. And this ratio is called gyromagnetic ratio. क्या बोलते हैं इसे? Gyromagnetic ratio. The value of gyromagnetic ratio is 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg. MCQ में आ सकता है, ठीक. So magnetic moment in terms of L, that is nothing but E by 2me into L. ये हमें magnetic moment का फॉर्मूला मिला. But if I want this formula in vector form, then this formula can be written as in vector form MO वेक्टर इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लाना है तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए. चलो पहले हम पता लगाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन. हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. चलो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंसिडर दिस सर्कुलर ऑर्बिट. If I consider this type of circular orbit in this plane, then area vector is always perpendicular to the plane. So this is the plane of figure, and area vector will be in upward direction or in downward direction. या तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी या तो नीचे की तरफ होगी. तो दो पॉसिबिलिटी है. सो हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? For that we should apply right hand thumb rule. Just you have to curl your fingers in the direction of electric current. In the direction of electric current. इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन में मत कर्ल करना, नहीं तो गलत मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी. इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट मत करना, वरना मैग्नेटिक मोमेंट की गलत डायरेक्शन मिलेगी. चलो हमें कौन सी डायरेक्शन में टर्न करनी है फिंगर्स को? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So current is flowing in this direction, anti-clockwise. So just you have to turn your fingers in the direction of electric current, and thumb will give you direction of magnetic moment. इस फिगर को ऐसे मत कंसीडर करो, इस प्लेन में कंसीडर करो. तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी? ऊपर की तरफ. यस और नो? सो हियर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ MO वेक्टर. Right, in upward direction. Now I want the direction of L vector. L vector is equal to R vector cross P vector. R vector cross P vector. तो यहाँ पे भी क्रॉस है, तो using right hand thumb rule we can find the direction of R vector cross P vector, or you can apply right hand screw rule. जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो. For this particular situation, this is R vector and this is the direction of P vector. Yes or no? This is R vector and this is direction of P vector. So how can we find the direction of angular momentum? Just you have to rotate first towards second. First towards second. मुझे बता कौन सी तरफ मिला? फर्स्ट वेक्टर कौन है? R वेक्टर. कौन है? R वेक्टर. सेकंड कौन है? P वेक्टर. अब मुझे मालूम है आप लोग क्या गलती करोगे. अब इसे ऐसे घुमाओगे और ऊपर की तरफ लाओगे, है कि नहीं? क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर हुआ. गलती कहाँ कर रहे हैं? जब मैंने आपको राइट हैंड स्क्रू रूल सिखाया था तब मैंने बताया था व्हेन वी आर कंसिडरिंग टू वेक्टर्स इन वन प्लेन, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर. सो जस्ट यू हैव टू रोटेट फर्स्ट टुवर्ड सेकेंड. तो हमें दोनों की क्या मिलानी है? टेल. बोथ द वेक्टर शुड हैव कॉमन टेल. क्या होनी चाहिए? कॉमन टेल. तो ये हो गया हेड और ये हो गई टेल. तो दिस इज R वेक्टर, दिस इज P वेक्टर. सो वी कैन शिफ्ट दिस P वेक्टर ओवर हियर. नाउ दिस इज द टेल ऑफ P वेक्टर, दिस इज द टेल ऑफ R वेक्टर. ओके, सो नाउ वी कैन अप्लाई
right hand screw rule or right hand thumb rule. Just you have to rotate first vector towards second, first towards second. अब अप्लाई करो, अब मिलेगा R क्रॉस P. स्क्रू रूल लगाएंगे तो स्क्रू कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? नीचे की तरफ. थंब रूल लगाना है, जस्ट रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड, फर्स्ट टुवर्ड सेकंड, एंड थंब विल पॉइंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो एंगुलर मोमेंटम इज in downward direction. So this is the direction of angular momentum, L vector. Now magnetic moment and angular momentum both are in the same direction or in the opposite direction? Both are in the opposite direction. Magnetic moment that is in upward direction and angular momentum that is in downward direction. So this MO vector can be written as MO vector is equal to minus E by 2ME L vector. MO vector is equal to minus E by 2ME into L vector. When we are considering motion of negatively charged particle, at that time MO vector is equal to minus E by 2ME into L vector. But instead of this electron, if we take positively charged particle, motion of positively charged particle, magnetic moment will be in the direction of angular momentum. So this way we can find the direction of angular momentum and magnetic moment. तो ये हमें रिलेशन मिल गया वेक्टर फॉर्म में. दिस E by 2ME इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो. वैल्यू याद रखना 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी. ऐसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. E by 2ME, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन टू अस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन टू अस. यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी. यूनिट क्या बनेगा? कूलम पर केजी. यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम, यूनिट ऑफ मास दैट इज केजी. नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर्स हाइपोथेसिस, electron can revolve only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. L is equal to nh upon 2 pi. ये चीज़ शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12 में. पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स हाइपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट हाइपोथेसिस, एंगुलर मोमेंटम इज integral multiple of h upon 2 pi, where h is called Planck's constant, and value of Planck's constant that is 6.625 into 10⁻⁻34 joule second. So value of h that is 6.625 into 10⁻⁻34 joule second. So for permissible orbit, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो एंगुलर मोमेंटम हमें क्या मिली? h अपॉन 2 पाई फॉर पर्टिकुलर एटम, nh अपॉन 2 पाई. इफ आई टेक n इज इक्वल टू 1, देन वी विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. इफ वी टेक n इज इक्वल टू 1, देन दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी मिनिमम h अपॉन 2 पाई. And for minimum value of angular momentum, we will get minimum value of magnetic moment. चलो minimum value of magnetic moment obtain करते हैं. कितनी मिलती है? वैल्यू obtain कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगी? MO minimum is equal to, क्या फॉर्मूला बनेगा? MO minimum is equal to E by 2ME into एंगुलर मोमेंटम. मिनिमम एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगी? h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई. 2 इंटू 2 दैट इज 4. वैल्यू ऑफ E दैट इज नोन टू अस. वैल्यू ऑफ h दैट इज 6.625 इंटू 10⁻⁻34. वैल्यू ऑफ ME दैट इज ऑल्सो नोन टू अस. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E, h, ME एंड पाई. यू विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. So this value you will get MO minimum is equal to
ये वैल्यू मिलेगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। MCQ के लिए याद रख सकते हो, बोहर मैग्नेटॉन दैट इज 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। I hope the concept of magnetic dipole moment of a revolving electron is now clear to you। बिल्कुल सिंपल सी थियरी है। पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेना है। एक बार इलेक्ट्रिक करंट मिल गया तो फिर हमें उसकी वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में। वंस मैग्नेटिक मोमेंट इज अवेलेबल टू अस वी कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वंस एंगुलर मोमेंटम इज अवेलेबल टू अस you can find magnetic moment in terms of angular momentum. That will give you relation between angular momentum and magnetic moment. Angular momentum and magnetic moment. E by 2me, that is called gyromagnetic ratio, and its value that is 8.8 into 10⁻10 coulomb per kg. In vector form, mo vector is equal to minus E by 2me into L vector. It means for negatively charged particle, magnetic moment is in the direction opposite to angular momentum. According to Bohr's hypothesis, L is equal to nh upon 2 pi. If you want minimum value of angular momentum, then you should take n is equal to 1. If we take n is equal to 1, then we will get minimum value of magnetic moment. Minimum value of magnetic moment, that is E by 2me into h upon 2 pi. So for particular atom, if we take n is equal to 1, then we will get minimum value of angular momentum, and for that atom minimum value of magnetic moment, that is 9.27 into 10⁻⁻24 ampere meter square. This value is called Bohr magneton. क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं? अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। These things already we have studied in chapter number 1 and 2. यहाँ पे हमें मैग्नेटिक डायपोल कंसिडर करनी है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर की। This is uniform magnetic field B vector. If bar magnet is placed in external magnetic field B, suppose this is north pole and this is south pole, then what will be the direction of magnetic moment? What is the direction of magnetic moment? From north to south or south to north? Last time we have studied क्या डायरेक्शन होती है, साउथ टू नॉर्थ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. नहीं याद आ रहा, याद करो. When electric dipole is placed in external electric field like this, minus q plus q, then what is the direction of electric dipole moment? That is from minus q to plus q. This is electric dipole moment p vector. This is magnetic dipole moment m vector. Here this p vector makes an angle theta with electric field E vector. Here this magnetic moment makes an angle theta with magnetic field. Force acting on plus q charge, that is in the direction of electric field or in the direction opposite to electric field? In the direction of electric field. So this is the force acting on positive charge, correct? So force acting on north pole of the magnet will be in the direction of magnetic field. Force acting on north pole. Force acting on negative charge is in the direction of electric field or in the direction opposite to electric field? In the direction opposite to electric field. So here force acting on south pole, that is in the direction opposite to magnetic field. तो समझ लो ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे फोर्स कौन सी तरफ लग रहा है, इस तरफ, और साउथ पोल पे फोर्स कौन सी तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ. एज वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज
is same as the magnitude of force acting on negative charge. QE, here QE, because it is in opposite direction, therefore we take minus QE, correct? So magnitude of force is same, therefore in uniform field, force acting on north pole will be equal to force acting on south pole, correct? Therefore resultant force acting on this dipole will be 0. Net force, that is 0. Net force acting on the dipole is 0. But couple is formed. Here these two forces will form couple. These are two different lines of action of force. When we have two different lines of action of force, non-collinear forces, then couple will be formed. And when couple is formed, then what will happen? Dipole will rotate. It means some torque will act on it. So torque tau vector is equal to, what is the formula of torque acting on electric dipole placed in uniform electric field? Tau vector is equal to P vector cross E vector. Here formula of torque acting on magnetic dipole placed in magnetic field, that is M vector cross B vector. If I want magnitude of torque, then magnitude of torque M B sin theta, correct? If we take theta is equal to 0, then what will happen? This magnetic moment will align in the direction of magnetic field. Yes or no? When magnetic moment is in the direction of magnetic field, at the time this theta will become 0. When theta is equal to 0, then torque acting on the dipole will be 0. So torque will become 0. This condition is called stable equilibrium condition. कौन सी कंडीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन. इट मीन्स इफ यू लीव दिस मैग्नेटिक डायपोल from this angle theta, then what will happen? This dipole will try to align in the direction of magnetic field due to this magnetic torque. ये मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से डायपोल ऐसे अलाइन हो जाएगी, क्योंकि डायपोल की चाहत होती है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करती है. यस और नो? बिकॉज दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, and in this condition torque acting on the dipole will become 0 and the dipole will remain in this state. मतलब यहाँ से छोड़ा जाए तो डायपोल ऐसे रोटेट करेगी और थीटा क्या हो जाएगा? 0. एंड आफ्टर दैट टॉर्क विल बिकम 0. टॉर्क 0, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 0, देन डायपोल विल रिमेन स्टेबल. इफ वी टेक अनदर कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then torque acting on the dipole will be maximum, that is nothing but mb sin 90, that is 1. So torque will be maximum. So this condition is called non equilibrium condition. कौन सी कंडीशन बोलेंगे? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन. Because when theta is equal to 90 degree, at that time maximum torque will act on it and dipole will rotate. Therefore this condition is called a non-equilibrium condition. If I take theta is equal to 180 degree, then this magnetic moment will be in the direction opposite to magnetic field. At that time torque acting on the dipole will be 0, because sin 180, that is 0, and that condition is called unstable equilibrium condition. Unstable equilibrium condition. If m vector is in the direction opposite to magnetic field, then theta will be 180 degree and torque acting on the dipole will be 0. तो torque हो जाएगा 0. When torque acting on the dipole is 0, then dipole will not rotate. It will remain in equilibrium condition. But if we displace the dipole, suppose this is B vector and this is M vector.
Now, if the dipole is displaced slightly by small angle theta, then what will happen? This dipole will try to align in the direction of magnetic field and theta will become 0. It will try to attain stable equilibrium condition. It will try to achieve the stable equilibrium condition. So this is called unstable equilibrium condition. When magnetic moment is perpendicular to magnetic field, then that is called non-equilibrium condition. When magnetic moment is in the direction of magnetic field, that is called stable equilibrium condition. So this is the formula of torque acting on magnetic dipole placed in external magnetic field. ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो गई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में. यस और नो? टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. This is nothing but torque acting on magnetic dipole placed in uniform magnetic field. Next time we will obtain the formula of potential energy of electric dipole placed in external uniform magnetic field. I am stopping here. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.